No, I can send request. But she has not joined yet. रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया है बट अभी यस मैम है इसलिए I'm sorry I took so much time. No, ma'am, we are sorry we can't. Yes. Welcome, ma'am. Foundation of Art and Culture आपका बहुत स्वागत करता है आज के लाइव सेशन में. Thank you so much. Thanks a lot for inviting me for this particular live session. It is our pleasure to have you here. हम बहुत खुश हैं कि आप जैसे महान कलाकार आज फाउंडेशन के से लाइव जा रहे हैं. थैंक यू सो मच मैम. मैम हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमें कुछ आपके आर्ट प्रोसेस के बारे में बताइए. But first I would like to say that how I started. I'm a painter, so I was doing. I love to do my painting mainly, but काम करते मैंने पेंटिंग करते करते एक चीज का बहुत ख्वाहिश होता था कि मैं पेंटिंग को कैसे सामने खड़ा हुआ है इस तरह से कैसे देखूं. और उस कारण में मैंने पहले जो शुरू किया था that was in 1992 और 93. हमने सेल बोट का जो सेल होता है जिसे खड़ा रहता है उस तरह से मैंने उसको पेंटिंग स्क्रॉल बनाया and I gave a twist. I suspended it from the ceiling and gave a twist at the bottom and it looked like a kind of land or a sailboat का जैसा वो खड़ा हुआ है सामने और वो कुछ sculpturous three-dimensional दिख रहा था. तो वो चीज मेरे लिए बहुत important था कि वो दिखे, just not painting. I wanted to see it standing in front of me. तो वो मेरे लिए बहुत very good proposition था. And उसके बाद हम जब यहाँ पे अपना वो मैं फ्रांस में थी तब वो जब शुरू करी थी. उसके बाद हम ऐसे तो हम लोगों का always I had this thing in my mind that the way I learned the technique of doing painting that is actually tempera technique where I used paper and cotton fabric. So that idea was very much with me that whatever the large work I do, I will create my own paper in that way, and it will be. I always wanted to do large work actually. When I started working in Kolkata, that is also the scrolls I did, several scrolls, so that you can walk through. Which I showed say about 10-15 of them together and one can go in and out and it's an experience. So this is very important for me to जैसे कि space देख के उसके साथ interact करना और उसको लेके काम करना. तो स्पेस देखते ही मुझे जो पेंटिंग का आइडिया आता है वो पेंटिंग में आपको घुसना है. तो उस तरह से मैं कुछ करना चाहती थी. तो धीरे धीरे माय वर्क स्टार्टेड चेंजिंग. चेंज का बहुत कारण एक ये था कि हम देखते थे हमारे रास्ता में जब हम वॉक के लिए निकलते थे तो तब देखते थे कि पीपल आर taking away weeds in the house and they're throwing it on the street. और स्ट्रीट में वो पड़ा रहता है तो it's a kind of fresh, beautiful medicinal actually plants.
और उसके बाद ऐसा भी लगा कि गाड़ी जब उसके ऊपर से जाता है तो इट गेट्स पेस्टेड ऑन द स्ट्रीट। तो उसमें क्या होता है कि एक अजीब सा 2 dimensional thing starts coming, and so that way when it becomes 2 dimensional, then this particular thing made me thinking in a way that कि ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। मैंने मुझे वो काम में ले आने का इच्छा हुआ। Then actually at that time my mother was very unwell. She was she was her actually it's a kind of illness and decaying. She was like because of illness and all. So I could see that in those weeds. I saw that they are fresh on the street, and then they're getting pasted, and then gradually it becomes dust only. So I could connect it with the life and death kind of ideas. So it's not like when I'm saying it sounds very easy and all, but it was like I was going through a kind of particular condition, and then I was seeing things, so I could, that is the reason ऐसे कुछ दिख रहा था मुझे। उसके बाद मैं शुरू किया, पेपर बनाया, lots of Nepali paper and tissue paper, Chinese paper, then any kind of paper, brown paper, and उसके साथ मैं cotton fabric में लेती थी, उसको paste करती थी इसके ऊपर। तो my medium was synthetic glue, and तो उसमें से वो जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो है वो होता है तुलसी, लेमन ग्रास, कुछ भी मैंने many different things, तो वीड्स के हिसाब से वो निकालता है। तो वो मैं उसके ऊपर पेस्ट कर देती थी एंड पेपर से उसके मैंने उसको छुपा देती थी। बट देन आई स्टार्टेड यूजिंग बैकलाइट, एंड बैकलाइट से वो दिखता था, सामने से शायद कुछ भी ना दिखे, लेकिन बैकलाइट के कारण it used to look like an X-ray plate. My father was a doctor, so I always knew this microscopic thing, like how it looks, and the X-ray how it looks. So I wanted to also try something in my work. That gave me the I mean, this is the way I could bring it in my work. उसके बाद मुझे लगा कि मैं अगर I want to create a natural, इसका डिजायर इसलिए हुआ था because हम लोग जब सॉल्ट लेक में आए थे, तो हम सॉल्ट लेक मैंने कलकत्ता का एक part of Calcutta, it's called Salt Lake, and it was actually fishery, a kind of marshal land, and it was all मैंने रेत से उसको भरा गया था। धीरे धीरे लोग वहाँ पे रहने लगे। तो it is the shrinkage of natural habitat and water bodies, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके एक चीज बहुत क्वेश्चन होता था कि भाई ये किसका जगह है। हम आके पैसे से खरीदा हुआ एक स्पेस है, वो हमारा है, वो हमारा जगह है कि वो मच्छी लोगों का जगह था, या तो और कुछ का जो वाटर बाउंड क्रिएचर्स उन लोगों का जगह था। सो दैट वाज वन क्वेश्चन केम इन माय माइंड, एंड आई यूज्ड टू रियली फील दैट आई विश आई कुड डू समथिंग। तो उसके बाद मेरे सामने एक प्रोजेक्ट आया था कि मैं क्या कुछ करना चाहती हूँ। म्यूजिक इमेज से वो आया था, वो मेरा गैलरी, आकार प्रकार गैलरी, एंड रूबीना मैडम माय क्यूरेटर, इन लोग जो हमको वहाँ पर ले जब गए थे, देन आई सॉ द स्पेस एंड इमीडिएटली आई सेड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू क्रिएट अ जंगल, अ नेचुरल स्पेस, एंड आई वांट टू क्रिएट अ imaginary insect which will be huge body, and but it needs a restful area, a peaceful space. So I wanted to create it in that way. So it was quite a big space, and so I would say that it was tremendous support I got from Madam Rubina Karode and my gallery. Tremendous support because of that kind of huge work. It needs big support to, well, I wanted to see it, I wanted to install it. So that gave me a lot of confidence when I was building the whole thing. तो उसमें से ये है कि मैं ये
मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा मटेरियल एकदम चेंज हो गया था कि हम बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर रहे थे, पत्ते जो सूखा हुआ या तो इवन मेडिसिनल प्लांट्स जो उखड़ा हुआ बाहर रास्ते में मिलता है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इवन फॉर द कलर दैट दो आई यूज्ड एक्रिलिक कलर बट एट द सेम टाइम आई यूज्ड लॉट ऑफ I mean art colors and all, and actually material didn't become any problem for me. I wanted to work with everything. I didn't want to see that whether it's going to last forever, 300 years or 1,000 years. I do not know all those things. Because it's a question also that whether it's permanent or not. But I wanted to give a fragile things like fragile material to give a kind of permanency, so that I layered it with papers, and paper is almost like skin, as if the body, the organic material, that's the body, and that's underneath the skin. And when you put it in front of light, you can see the both thing, but the paper doesn't overpower, but the material that I have used, that overpowers. Even if I paint in front of, on top of it, it doesn't show. It only shows that what is inside. And in that case, like I didn't want to make purposefully a kind of tree or very descriptive thing, but it was kind of almost fragments, but putting things together and giving it a shape, because I wanted to create a jungle. And for the insect, there was a structure made by iron, steel things, and so there it's like a kind of it's a kind of pathway that you enter into it, and it's not there is no light. And when you put on your mobile light or torch, then you can see what is inside. And it was full of insects world. Now, like insect, I use since long time. I had been using insect because I created my cocoon, and I did put a lot of butterflies and other insects. It draws my attention like anything, because I love to roam around in midday, like when it's like 2 o'clock in the afternoon. I go and or 1 o'clock in the afternoon, I go for my work because I love doing that, because at that point, because of the sunlight, it is just in the middle, and the color becomes absolutely transparent, and that any flower becomes much more brighter, much more meaningful for me. The color has got tremendous meaning for me. So that is why I love going to the nature during that time. And these are the things, like when you go for that, you see a lot of insects. And not only insects, there are many other things. But a wonderful thing in the nature is that all sorts of creatures are living together without fighting with each other. They have got their own way to their, they are into their own space. Nobody is interfering with another person, another thing. Not like human being. उसके देन वो नेस्ट जो बनाते हैं, चिड़िया जो बनाते हैं वो जमीन पर, वो मुझे बहुत मजेदार लगता है. And I watch it like for hours. And फिर वो जो wasp, उसको क्या कहते हैं, anyway, like any kind of insect, they build their house. If you see, you will be surprised that they have got all oxygen कहाँ से आएंगे. It's like which area is safer, and everything is there. A very good architect actually. So I tried to get that idea from that when I made my insect or my cocoon. Is the idea is from there only. The layers of the mud thing they make with mud, but the layers I used it with paper. I did it with paper. And also, I just imagine that when there is a crisis in their world, suppose
a natural disaster is coming or something, they go together and they sit together. They are not fighting with anybody, but all kind of species are together. So in my cocoon or in this the other work, the huge insect that I made, inside is all kind of insects are there. And they have got their saliva, which is very shiny, and their body is very shiny, full of color. I used a lot of sequins, used a lot of beads, any kind of thing, like the material is a kind of a fabulous thing for me. I just go absolutely crazy about it. So I used everything possible by me. And so that is the thing, that when you go in, you can see all those things. But if you are not putting on your light, you cannot see. So this is how I created a space where that huge insect is taking rest. वो जंगल में अपना पीस के लिए पहुंचा है, क्योंकि वो हमारे जैसे है, because we are also like that. We need peace because it's so much like, again I'm saying, I'm going back to this, that in Salt Lake where I am, it was a water body that I told you, it was a marshland, but now it's a concrete jungle full of houses. उसमें और कुछ नहीं है, रास्ता, houses, everything. हम लोग के पास में जो एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज थे. आधे आइला में मर गया था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा ब्रिज आया, बनाया फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर में जितने सारे ट्रीज बीच में आया और सब मरा गया, मैंने मर ही गया, मार दिया गया. तो one article came, I saw that they are not alive anymore. So this is how we are just capturing the natural habitat. We don't allow anything to survive on its own. Nature is like, you stay there, we are here. And nearby there is a park. तो वहाँ पे इतने कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने बना दिए कि मुझे और देखने को नहीं मिलता है कि जो बारिश होने का बाद सूखा पत्ते जो एक साथ में हो जाते हैं, उसमें बारिश का जो वाटर का लाइन आता है वो नहीं दिखता है. तो even like a snail is moving and they leave a kind of very shiny mark on the ground, and unless and until you notice, you don't see it. Like it's something that you got to see. Now, like for my work, that I give tremendous amount of time, and it's as I work, like not one work for one work. It's like several work make one work, and it's a kind of like 1.5 year or 2 years project. I mean, मेरे लिए time का कोई वो नहीं होना चाहिए. I mean, I don't like to work that मुझे एक महीना में कुछ काम करके देना पड़ेगा. So it becomes very tough for me. And in fact, I start 10 works. Not start, one by one I'm doing. But it doesn't mean that when I complete my 10th work, I will not go back to my first work. I will go back. And several times I work in several period, different time. Suppose I started it in July, and next year, January or February, I'm working back again. Because every time I'm learning from the work. काम से इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है, एक काम से सीखने को मिलता है, जो पहले किया है उसमें फिर से मैं पहुंच जाती हूँ, ताकि इसमें जो सीखा है लास्ट में, तो पहला में नहीं है, तो हमें मैं ऐड करती हूँ. As a result, my work is never complete. It's a continuous process, and I believe in continuous process. It can't be like it's done, I won't touch it again. No, nothing like that is there. I'm doing a drawing at this moment. I started it in 2009 or something. And in between several times I did. Nothing happened. I mean, I was never satisfied. This time again I started. I said that whatever was it's a figurative work if there was. And then I realized that I don't want figures. I did paint it with almost a lot of white. And I started painting, started drawing, and then about a month time, like I reached to a place that now I feel that, okay, I am a little satisfied. So this is how I go on about my work. But to my mind, it is a continuous process, and my work, for any artist is like this, that the work teaches. Whenever there is something, a space in front of me,
you feel like entering into the space, whether it's a canvas or a paper or whatever. You want to enter into it. ये जो enter करना वो बहुत जरूरी बात होता है. दूसरी और एक चीज मुझे कहना है कि अभी कोरोना का जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसमें से ये है कि दो वी फील दैट हम लोग इतना मिजरी, इतना प्रॉब्लम सबके लिए है. So many people are suffering, so many people are no more, like whole world is suffering. तो उसमें ये होता है कि एक फीलिंग होता है कि हम शमशान में बैठे हुए हैं, कि पता नहीं हमारा बारी भी आ सकता है, हम भी चले जाएंगे. But at the same time we are learning something, that what is the meaning of time. We forgot that we are busy with so many stupid things. तो वो लगता है कि जो भी सामने आता है, जो मैंने किया नहीं वो कल नहीं आज करते हैं, आज ही कर लेते हैं, ताकि मैं कल के लिए नहीं बैठूंगी. तो that way is another thing, the teaching of discipline, the value of time, the value of to be with yourself, the inner self or yourself, वो बहुत जरूरी चीज हो गया. मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है अभी, कि हर समय कैसे मैं अपने आप के साथ टाइम बिताऊं और कैसे मैं अपने आप के साथ उसका रिलेशन बिल्डअप करूं. वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है ड्यूरिंग दिस कोरोना की काल में. And दूसरा thing, one of my friend Akhilesh asked me about the white in use of white in my work. So I want to answer that. I want to really answer that, because white is something that I feel is light in both way. Light माने बांग्ला में बोलते हैं आलो means जो light, sunlight and all. Another thing, the lightness, तो हल्का वो जो हो वो फीलिंग भी. तो उसमें एक मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं व्हाइट का यूज करती हूँ, इस व्हाइट इज नॉट जस्ट वन टच ऑफ व्हाइट, इट्स लाइक इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ काइंड ऑफ अनदर व्यक्तित्व, जहाँ पर आप समझते हैं कि उसको समझना भी जरूरी है. एक रंग को हर समय समझने का जरूरत है, because it's a kind of character and you got to study the character, and when you are applying it has to give you guidance, otherwise you can't do it, because if you do not understand the color and if you do not ask the permission that I am using it, help me, and then it starts coming slowly, but takes time. एक चीज और कहना है कि जैसे कि नेचर को हम कभी जोड़ हाथ नहीं बताते हैं, भैया मैं आपको काट देंगे, मतलब you won't survive. We don't take permission from the nature, so that way we are just destroying nature. So it should be stopped. And with the nature, if we can build up, that will be great. So recently I went to Hyderabad in February, in Golconda, that fort में हम गए. So I saw that what a fantastic thing, boulders are there, and the जो उन लोगों ने वो जो उसका जो फोर्ट का जो वॉल उन लोगों ने बनवाए, वो बोल्डर को मैंने फेंका नहीं और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया. They left it like as it is, and उसके साइड से उन लोग बनवाए, और बाकी हैदराबाद शहर को, मतलब जो चट्टान थी वो सब चट्टान था, उसको सबको एकदम मैंने कुछ नहीं है अभी. It's like full of structures only, architecture. It's a concrete jungle now. So horrifying sight, and it's such a difference from Golconda fort and this new city. So you can see that what we are doing with nature. Yeah. So you can ask me questions. Okay. मैम आपने बहुत सारे नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया,
और आपने बोला भी कि आप उसको ज़्यादा टाइम तक आप नहीं चाहते कि वो प्रिजर्व रहे या नहीं रहे, तो आप ग्लू जो यूज़ करते हैं उसमें, वो आपका ऐसा कौन सा ग्लू होता है, किस टाइप का मटेरियल होता है वो, आप किस मतलब उसमें पानी की क्वांटिटी क्या होती है और वो क्या उसका टेक्सचर है, किस टाइप का होता है, लिक्विड रहता है? कभी 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 थिकनेस की जरूरत होता है सिंथेटिक ग्लू का, और कभी व्हेन आई एम टेस्टिंग पेपर देन इज लेस माने द वाटर कंसिस्टेंट वाटर उसमें ज्यादा मिलाना होता है, तो ये है. बट आई टोल्ड यू ड्यूरिंग दिस थिंग दैट fragileness of the material is there, but I am trying to give a kind of permanence. Like I do not know how long it is going to survive. I am also new to it, and उसको कितना दिन तक वो रहेगा इस तरह से. अब तक तो है 10-15 साल. 93 में जो किया था वो अभी भी है, कुछ नहीं हुआ. तो उसके बाद में भी जो किया अभी तक कुछ नहीं हुआ. तो अब 20 साल बाद में क्या होगा वो मैं देखूंगी कि नहीं है, वो तो नहीं मालूम. तो बट वैसा है कि ये some kind of permanency is there, but I do not know. Okay. Ma'am, there is some changes must be happening in your work, like पुराने टाइम के वर्क में और अभी. तो what do you see the change? Changes इंसान के नेचर से अपने आप होते हैं या आपने अपने काम में क्या क्या चेंजेस देखे? देखिए चेंजेस पहले तो 2 डायमेंशनल पेंटिंग हम करते थे, और करते करते मुझे ये भी आया कि मुझे और कुछ चाहिए. मैंने बताया कि मैं 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल काम करने के लिए मेरा इच्छा होती रहा. इट डजंट मीन दैट आई स्टॉप डूइंग माय 2 डायमेंशनल कैनवस पेंटिंग एंड एनीथिंग, बट आई एम डूइंग इट, बट आई एम यूजिंग मोर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल इनटू इट. ये जो चेंजेस अपने आप होता है, जबरदस्ती का नई चीज नहीं है. When more you experience new thing, more you experience yourself, the desire from inside keeps coming, like that I want to do this, I want to do that. And if I do this way on the canvas also, what happens? And actually it took me long time to go back to my canvas painting, so that because I wanted to use my material, whatever I found material and all, and also organic material. And wherever I have reached, I'm quite happy with it, and I want to in future, if I'm alive, then then I will definitely try to do work with those kind of material. Yeah. Okay. Thank you मैम, थैंक यू सो मच. आज आप हमारे साथ लाइफ में आए, आपने अपना अमूल्य समय में से हमारे लिए really enjoy. थैंक यू सो मच. फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you very much to everyone, whoever is listening to this, whatever I say. If it makes sense or not, I do not know. But I'm very happy that I really have enjoyed. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Bye. Take care. थैंक यू मैम आज के लाइव सेशन के लिए. कल हमारा लाइव सेशन लक्ष्मण एले सर के साथ है. शाम 5 बजे आप सभी का फिर से स्वागत है. धन्यवाद.